I have a big update coming in. Delhi police have reached Swati Maliwal's residence. The woman in question, who had called up twice at the police control room, citing an emergency situation that she was being assaulted at Delhi CM residence, but has gone in a full-on silent mode ever since. The additional CP and the DCP, so this means our senior Delhi police officers, have reached Swati Maliwal residence. It's also one of the reasons is that the former DCW chief and incumbent member of parliament from Rajya Sabha, Swati Maliwal, has been she's not yet filed an FIR on what she's called an assault. Because in PCR calls that are made, there has to be documentation, there has to be a conclusion on it. And it is usually followed by a written complaint. We are told by our sources in Delhi police that Swati Maliwal had also said that she'll return. She'll return and file a written complaint. But that hasn't happened, and it's been 4 days here on. I'm talking about Monday morning, Tuesday, Wednesday, Thursday. And that's one of the reasons senior officers there on your screens who have reached it. Let's just try and listen in and understand what happened. There is a stoic silence outside Rajya Sabha member from Aam Aadmi Party, Swati Maliwal's residence. Yesterday, Sanjay Singh, Rajya Sabha member from Aam Aadmi Party, and Vandana, her close aide from the Delhi Commission of Women, were here at her residence. Of course, today the situation is different, as with Chief Minister in Lucknow. Next to Arvind Kejriwal, Vibhav Kumar was very much visible. Vibhav Kumar is the same man who was the former OSD of the Delhi Chief Minister and has been named by Swati Maliwal as the one who has assaulted her inside the CM's residence in civil lines. It's been several days now, but Swati Maliwal has not come forward and registered any complaint or FIR at the Delhi police station in civil lines about this assault, even though she had made a PCR call and she had also gone physically to the police station. The party is saying that it's an internal matter, it's a family matter when confronted in the Lucknow press conference along with Akhilesh Yadav. But it seems like the party is in a crisis whether to take the side of Vibhav or Swati, because all in all, there is no solution to the problems that Aam Aadmi Party is facing with this crisis right now. With Kirpal Singh in New Delhi, Milan Sharma for India Today. So this is the situation on the ground as well, and that was a ground report sent by Milan Sharma. I want to bring her in now in this live telecast. Milan, I'm sure you're trying to get in a word from Swati Maliwal or Vandana Singh also for that matter. But as Milan continues to track that, Arvind Ojha is also joining me, and Arvind is tracking the investigation aspect. Arvind, let me take that first question to you then. कहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन स्टैंड करता है? क्योंकि उस दिन जब हमने पहले बात की थी, जब आपने ये न्यूज ब्रेक करी थी इंडिया टुडे पे मंडे मॉर्निंग को, तब तो ऐसा लग रहा था कि स्वाति मालीवाल बस कुछ ही देर में जाके वहां पे पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देंगी. अरविंद, हमारे साथ बने रहिए. इट अपीयर्स देयर सम एक्शन गोइंग ऑन एट स्वाति मालीवाल्स रेजिडेंस. आई अपोलोजाइज फॉर द कांस्टेंट चेंज. हियर्स व्हाट्स हैपनिंग. और अंदर की तरफ गए हैं. आपको बता दें कि आज जो पुलिस कंप्लेन नहीं हुई है, लेकिन एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी फाइल करनी है. उसको लेकर हो सकता है कि दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल आज यहां स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए आए और उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या वाकई में स्वाति मालीवाल कोई तरीके की कंप्लेन फाइल कर सकती है या नहीं. किरपाल सिंह के साथ मिलन शर्मा, आज तक. That was another report sent in by Milan, who's trying to get in more angles. अरविंद, आप हमारे साथ बने हैं, जी बताएं, क्योंकि सीनियर अफसर पहुंचते हैं, इसका क्या मतलब माना जा सकता है इसमें? देखिए, जो स्वाति मालीवाल हैं, उन्होंने पहले पीसीआर कॉल की थी और सीएम हाउस में असॉल्ट की कंप्लेन की थी. उसके बाद खुद वो पुलिस स्टेशन पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि कुछ देर बाद वो कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद विक्टिम के पास जाएं और उनसे स्टेटमेंट ले या फिर उनसे बातचीत करें. ये भी जानने की कोशिश हो सकती है कि क्या उन्हें किसी तरह की कोई मजबूरी तो नहीं है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो इस वजह से जो 3 आईपीएस ऑफिसर हैं, जिसमें एडिशनल सीपी रैंक के ऑफिसर वो भी मौजूद हैं, वो स्वाति मालीवाल के घर पर पहुंचे हैं. अब क्या स्वाति मालीवाल स्टेटमेंट देती हैं या नहीं देती हैं, ये कुछ देर बाद क्लियर होगा. लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी है पूजा, कि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने बिल्कुल ये कबूल कर लिया एक तरह से कि स्वाति मालीवाल के साथ कम से कम एक अपराध तो हुआ सीएम हाउस में, लेकिन
सवाल ये भी है कि इतने एक्सेप्टेंस के मतलब इतने स्वीकार किया है कि विभव के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसके बावजूद भी स्वाति आज सुबह दिखते मालीवाल हैं का वो कोई भी लखनऊ में एयरपोर्ट पे दिखते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद, मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि काफी लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर स्वाति मालीवाल नहीं देती रिटर्न कंप्लेंट किसी भी वजह से, क्या या चाहे उन पे प्रेशर हो या अब वो इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, तो क्या होगा इस केस में? क्या ये केस धरा का धरा रह जाएगा और एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे असॉल्ट होता है, जैसे वो कहती हैं, दिल्ली मुख्यमंत्री के घर पर, और केस क्या बंद हो जाएगा ऐसे ही? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको मैं फिर वही बताना चाहता हूं कि देखिए, जब संजय सिंह ने ये स्वीकार कर लिया और ये कहा भी कि अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है और सख्त एक्शन लिया जाएगा, बावजूद इसके अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है स्वाति मालीवाल की तरफ से। वो स्वाति मालीवाल जो हर मुद्दे को लेकर काफी मुखर रहती हैं, पब्लिक फोरम पर किसी तरह का उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है। वो पार्टी के चुनाव प्रचार में भी शामिल नहीं हुई है। कल संजय सिंह उनके घर पर पहुंचे थे। माना ही जरा है कि मनाने की भी कोशिश होगी, क्योंकि संजय सिंह ने जिस तरह से कहा कि आम आदमी पार्टी एक परिवार है, लेकिन स्वाति मालीवाल का किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आना, ये कई सवाल खड़े करता है। इस वजह से शायद दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची होगी, जो कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, एक पीसीआर कॉल चली है। फिजिकली खुद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन पर पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि पुलिस ऑफिसर को कि वो स्टेटमेंट देंगी। तो जो एक डाउट है वो क्लियर करने के लिए ही दिल्ली पुलिस के 3 ऑफिसर, सीनियर रैंक के ऑफिसर, वो वहां पर पहुंचे, नंबर एक। उसके अलावा एनसीडब्ल्यू ने सुमोटो लिया है, दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, तो दिल्ली पुलिस को भी अपना जवाब तैयार तो करना ही पड़ेगा कि हमने ये कार्रवाई की, प्रोसीजर होता है, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है विक्टिम से, उन्होंने जवाब दिया नहीं दिया। तो ये क्लियरिटी अभी कुछ देर बाद जब ऑफिसर बाहर आएंगे तब हम आपको बता पाएंगे कि उन्होंने Arvind, I'm sure that you will be trying to contact the senior Delhi officers and I'll be waiting for an update from you. Arvind Ojha is constantly trying to get an update on investigation. Remember that a victim calling or an emergency PCR call is anyway a serious issue. But when it's a sitting member of parliament, former DCW's chief, saying she's allegedly being assaulted at Delhi CM residence, it just adds on to a lot of serious and sensitive charges. Abhishek Anand is joining me for the latest on that. Abhishek, it's very unlike Swati Maliwal, isn't it? As a former Delhi DCW chief, she had been conducting late-night raids into dangerous areas. She's been a vocal feminist. She was with the wrestlers as well at Jantar Mantar. And then when it's an assault case on her, she appears to go silent. Well, certainly, Pooja, we have seen her sitting out in the on a dharna in a cold night alone, and raiding many places to rescue children and women from sometimes from the prostitution circle, and then sometimes from the domestic help circle. Now, Swati Maliwal is the person who everybody wants to speak to, and she has gone incommunicado. Right now, police officers, which our colleague Arvind Ojha were telling, are inside Swati Maliwal's residence. Now they are trying to speak to her to know what was going on inside the residence of Arvind Kejriwal. Abhishek, I request you to stay on because there is more updates coming in. The National Commission for Women, the NCW, appears to have summoned Arvind Kejriwal's close aide, call him right-hand man, call him a trusted aide, officially a personal assistant. Bibhav has been summoned by the NCW. Delhi Chief Minister has evaded questions when we tried to ask him on this issue in Lucknow, where he's presently campaigning. And the reason he's out on interim bail is for election campaigning, and then this issue happens, which has definitely taken on his campaigning targets as well. India Today reached out to both Bibhav and Arvind Kejriwal and Sanjay Singh. It appears none of them had anything to say, including Akhilesh Yadav. अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं हैं। आपके ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। स्वाति मालीवाल के मामले में अरविंद जी क्या कहेंगे? किसी के सही अरविंद जी, आज आपके साथ भी वो आए हैं, आज आपके साथ में भी आए हैं, झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। आप क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? हाँ, बोलो। और जो सोहेश जी साथ में घूम रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी आपके साथ घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जो एस जी आपके साथ में घूम रहे लगातार, आप क्या कहेंगे? संजय जी, आपने बात कही थी, सब लोग, पूरा देश
हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। विभव कुमार भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि विभव कुमार से सवाल लिया जाए कि जिस तरह से जो आरोप लगे हैं उसके बाद उनका क्या कहना है। इस गाड़ी में विभव कुमार मौजूद हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की कि विभव जी एक मिनट बात करेंगे प्लीज। आप विभव जी से बात करनी सर, एक बार बात करेंगे सर। विभव जी सर बात तो आप जवाब तो दे दीजिए सवाल का। विभव कुमार जी सर शीशा नीचे करिए एक मिनट सर खाली। विभव जी कुछ बोलेंगे आप? स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं आप पर सर, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने भी जो है जिस तरह से कहा, कुछ कहेंगे सर आप? विभव जी को आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो शीशा है गाड़ी का उसको भी नीचे नहीं कर रहे हैं। विभव जी कुछ आप कहेंगे? विभव जी जो आपके नेता हैं, राज्यसभा से एमपी भी हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं। No reply from Arvind Kejriwal or Bibhav Kumar, but senior cops of Delhi police have reached Swati Maliwal's residence. That's the big news coming in right now. The cops will likely start an investigation after they record a statement, because there's not been a written complaint from the Rajya Sabha member of Parliament of Aam Aadmi Party, Swati Maliwal, who's the former chairperson of the Delhi Commission for Women. But there will have to be an investigation. There will have to be at least some documentation, because PCR calls were made. And we are told they have reached Swati Maliwal's residence in Delhi to try and gauge sentiment from her. I want to immediately bring in Milan Sharma for the latest on that. Milan, clearly they were not simply a team of Delhi police. They were senior officers, from what I saw from the ground report you've sent, who arrived at the residence. But any confirmation if she did speak, did she evade, what happened, what is happening now there at the residence? Milan, go ahead. Well, Pooja, it clearly indicates the fact that Swati Maliwal has been holed up in her residence for the past 3 days. Yesterday, Sanjay Singh was here, and then Vandana Singh was also here. And today, senior officials of the Delhi police have reached her residence unannounced. It wasn't as if the police team was going to reach her and there was any indication or message even to Swati Maliwal and the kind of staff that mans this tower is what we noticed. And certainly, these are high-ranking officials. Additional CP, Commissioner Police Special Cell, and the additional DCP of the North District, a woman officer and a male officer have reached her residence. Outside also, I'll show you the car of the police that is currently stationed there. This was the very vehicle that came in with the police officials at the point of time that we were outside her residence. And it clearly points out to one thing and one thing alone, that perhaps the Delhi police is trying to convince Swati Maliwal to now register a complaint, or perhaps look at registering an FIR because of the fact that there has been no complaint that has been put forward by her in this particular matter. Apart from this, also
also the National Commission of Women had asked the Delhi police to submit a report of action taken report in the next 3 days. This was also an issue that was raised by the Bharatiya Janata Party today, where Gaurav Bhatia did a press conference saying that the National Commission of Women has asked the police to act on its own accord or perhaps take a suo motu cognizance. That particular PCR call that was made by Swati Maliwal on that day in the morning Milan, I want to know after this. 9:30 I see it here. I see at the residence that you're at. Yeah. There's clearly a lot of heightened activity. A lot of reporters have gathered here, expectedly to take a reaction from her. So can we say that, you haven't seen her walk out at least of this apartment premises in the past few hours or possibly days as well? And I'm talking about 4 days here almost. Yes, let me just show you that this particular tower is the tower where Swati Maliwal resides on the 3rd floor. It is a tower that's a Type 7 made for Rajya Sabha MPs only. So the entire tower is secure as well, and there are Rajya Sabha MPs who live in this particular tower. It's located at a very prime location in the central area of Delhi. But yes, Swati Maliwal has been holed up within her apartment and she has not stepped out. Even yesterday, as we noticed, Rajya Sabha MP Sanjay Singh as well as her close aide Vandana, who worked with her in the Delhi Commission of Women, both were here. She did not step out of her house. We even tried to contact her. She was not stepping out of her house. So yeah, the Delhi police has now reached her residence. And of course, as I mentioned, senior officials of the Delhi police have reached her residence. So it's not just to perhaps take cognizance of an NCW report per se, but also to perhaps talk to her or convince her in the matter to perhaps file a complaint, because it was Swati Maliwal, remember, who had gone to the Civil Lines police station and was willing to file a complaint, but then backtracked and said that I will file a complaint later. So, of course, what kind of action the Delhi police is going to take is also a question. Is Delhi police going to move ahead in a suo motu fashion? Can they, in fact, move ahead without her giving a statement or filing a complaint is also a very big question. That's the point. If she doesn't give out a written complaint or record a statement, then what happens? And I repeat here, not one PCR call, 2 PCR calls were made, and that clearly leads to, was the situation very serious? From Delhi, let me take you to Lucknow, because that is where Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal is, with Bibhav and with Sanjay Singh. Abhishek Mishra is joining me. Abhishek, you tried your best to get in a word from Akhilesh Yadav, from Mallikarjun Kharge, from the Delhi Chief Minister, from Bibhav even. Looks like everyone is on a silent mode. What are they saying otherwise? What is, if not defense, how are they reacting to the political showdown also that's erupted? Well, certainly, Pooja, we tried our best to get their reaction, but they kept ignoring the question. Yesterday, Akhilesh, and today also Kejriwal, his expression was evident enough that he felt that something is getting out of control for the party at the moment, but still kept mum. And Sanjay Singh took over the mic and he said, targeting the BJP, that there has been instances where it was accountability of the government and the BJP and they were silent. Akhilesh said there are several other important issues which needs to be raised rather than, questioning on Swati Maliwal. But, today we have witnessed one thing, that that this Aam Aadmi Party has a clear realization that this is now getting out of their hands. That is why they are not speaking much, although bringing his own OSG alongside in Lucknow is also a reference that they do not believe that there is any fault. Otherwise, they would have, missed the chance, or they would have not tried to bring him alongside. But one thing is very clear, that this is now escalating further. Delhi police has reached the house of Swati Maliwal, and at the same time, the silence of the opposition and Aam Aadmi Party is evident enough to understand that it is getting out of their control. Abhishek is reporting from is also a lot of heightened political activity. That is where the top India bloc leaders, Mallikarjun Kharge, Akhilesh Yadav, Arvind Kejriwal are there. And amid all of this, while they are trying to divert it, evade any answer, they want to, of course, tone down. It's an election season after all. BJP has jumped on it. BJP spokespersons, BJP leaders, those who have worked with Aam Aadmi Party earlier, all of them are charging at Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. Leading the charge is Home Minister Amit Shah. Here's what he said. सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है,
अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इससे भी बड़े मुद्दे हैं। अरे ये तो श्री अखिलेश यादव जी का भी बचकाना बयान है जी, बचकाना जवाब है। इस प्रकार का जवाब देने का मतलब है, एक बार उनको अगर ज्वाइंट प्रेस कर रहे थे तो अगर वो इंडी गठबंधन के वो हिस्सेदार हैं तो पूछना चाहिए ये सब क्या हो रहा है। अगर एक राज्यसभा के सांसद की एक मुख्यमंत्री के आवास पर मारपीट हो जाती है, पिटाई हो जाती है, उस पर सवाल भी पूछना चाहिए, उस पर जवाब भी देना चाहिए। अगर वो जवाब से बच रहे हैं तो वो जानते हैं कि 2024 में चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनका सुपड़ा साफ। मुझे आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने बताया, जो मैं बोल रहा हूं बड़े जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, जब स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया जा रहा था तो सुनीता केजरीवाल जी आदेश दे रही थी कि इनको मारा जाए, पीटा जाए। और एक बार नहीं, जब स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को फोन किया और केजरीवाल जी को, मिसेस केजरीवाल को पता चलता हो, फिर से आती हैं वापस और वैभव को आके कहती हैं इसको मारते पीटते हुए घर से बाहर फेंक के आओ। स्वाति मालीवाल जी को बुरी तरह से मरवाया, पिटवाया और बेइज्जत किया, और इसके बावजूद क्यों चुप है राजनीति के मोह के लिए स्वाति मालीवाल? ये पूरी दिल्ली और पूरी देश और औरत का सम्मान करने वाले लोग पूछ रहे हैं, ये औरत का बहुत बड़ा अपमान है। And all of this is not conjecture. Remember, after the calls made to the PCR and for which Delhi police has confirmed, Sanjay Singh also accepted that there was an incident that has happened at the Delhi CM residence, and he also named Bibhav in it, also promised that there will be action. What precisely did he assure in that press conference and then was seen today with Kejriwal and Bibhav? Listen in. एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है।